Now we learn medication management. Before administration any drug, we know the 10 rights. So let's understand what are the 10 rights. So there are 10 things goes under the 10 right. First thing was the right patient. Right patient. So how to choose or how to identify the right patient. So in the hospital there is a identification bracelet for every patient. So this identification bracelet put up our age, name, sex and patient MRI number and also the date of administration. So that means what a patient identification बेल्ट एज सेक्स एमआर नंबर एक्सेट्रा पुट होता है. सो आम गोटे पेसेंट गोटे हस्पिटाल कही था कि गोटे सिमिलर नेम रे बहुत सारा पेसेंट था तो आम कन्फ्यूज हो जाओ कि कौ पेसेंट को मेडिकेशन देवार अच्छी. सो आम फास्ट पेसेंट आइडेंटिफिकेशन बेल्ट सहित पेसेंट जो एडमिशन सीट थाए बिल सीट थाए ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା. ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯଦି ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ସିମିଲାରଲି ମ୍ୟାଚ୍ କରାଉଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଇଏ ରାଇଟ୍ ପେସେଣ୍ଟ. So it most important to identification right patient. Then second one is the right drug or otherwise known as the right medication. Which drug or which medication is prescribed or advised by the doctor for the patient. So first we check को drug टा doctor advise करछन्ती patient by. Then read the medication label carefully. को medication advice तो carefully में read करिबा. The do not administration medication which is prepared by the another person. यदि कहो कि एमती सपोज गोटे माने हॉस्पिटल रे कहो कि गोटे अन्य की नर्स की सिस्टर गोटे मेडिकेशन प्रिपेयर करी रखी देथिबे तो हमें जानि परिबे जे ए मेडिकेशन टी का पे कोन केते डोजेस सॉल्व होईची केते एमजी और केते एमएल सॉल्यूशन प्रिपेयर होईची. सो अनदर पर्सन द्वारा यदि किसी मेडिकेशन प्रिपेयर होते से मेडिकेशन को आम केबे भी हेले पेशेंट को दबानी. और जिते भी आम मेडिकेशन की ड्रग फार्मासी रिसीव करछे तर केयरफुली डेट ऑफ एक्सपायर ओपनिंग सब देखार अच्छे सब देखिए आम रिसीव कर बिफोर एनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन वी चेक प्रॉपर्ली. देन थर्ड वन इज द राइट डोज. how much mg or how much ml which quantity of medication is advised by doctor it should be checked. केते ml और केते mg रो मेडिकेशन एडवाइज है सेटा हमें प्रॉपर्ली चेक करबा. देन फोर्थ इज द राइट रूट. which route is given by or advised by the doctor. There are several route like oral, inhalation, topical, it's common. So IM, IV, per rectum, per vaginal. सपोज गोटे पेसेंट को IV एडवाइज हो इंट्रावेनस आम देखो इंट्रामस्कुलर देथो तो से सिचुएशन में पेसेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट हो. सो फर्स्ट वी नो द properly and read properly doctor advice who is route is advised by the doctor. Then next one is the right time. गोटे मेडिकेशन दबार राइट टाइम था ना 6 आवर डिफरेंस रे कि TDS कि BD कि QID एमती था. तो जिते भी मेडिकेशन एडवाइस तो बिफोर 30 मिनिट एंड बिफोर और आफ्टर 30 मिनिट भितर आम मेडिकेशन दे पारे. सपोज किसी कौन पे लेट हो गला तो गोटे मेडिकेशन दबार रूल थाए तो बिफोर 30 मिनिट एंड आफ्टर 30 मिनिट इट शुड बी एक्सेप्टेड. एंड नंबर 6 इज राइट एजुकेशन. राइट एजुकेशन. Right education means provide enough knowledge to the patient about why this drug given to him. गोटे पेसेंट को आम कुछ मेडिकेशन देवा पूर्व एमती ना कि जीव डायरेक्ट पानी टप कि डाक्टरखाना कौन हेल्ले भी देदेबा डॉक्टर एडवाइस करछन्ती सेमती नहीं. पेसेंट को आम कौन पे मेडिसिन दौचे प्रॉपर्ली एजुकेशन दबा एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड दिस थेराप्यूटिक और साइड इफेक्ट मेडिकेशन देले कौन साइड इफेक्ट आसो कौन बेटर बेनिफिट हम से सब एजुकेशन पेसेंट दबा. इट्स कंपलसरी एंड इट मस्ट बी नीडेड. नंबर 7 इज right to refuse.
पेसेंट को आम एजुकेशन प्रॉपर्ली देदेले कौन पे मेडिकेशन दिखाऊँगी तो एमती किसी माने बाध्यता फोर्सफुल नुहे डॉक्टर एडवाइज कर माने तुमको ये मेडिकेशन इंजेक्शन नवा पड़े सेमती हुए ना पेसेंट एंड रिलेटिव हैव प्रॉपर राइट टू रिफ्यूज द प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन सो पेसेंट रो पूरा प्रॉपर राइट अच्छी मेडिकेशन रिफ्यूज करने एनफ राइट अच्छी आफ्टर एक्सप्लेनिंग द साइड इफेक्ट आम पेसेंट को मेडिकेशन साइड इफेक्ट कही सारापर मेडिकेशन रिफ्यूज कर प्रॉपर एनफ राइट अच्छे सो जब पेसेंट गोटे मेडिकेशन रिफ्यूज कर दूसरी कि मुझे दैट्स मीन नुहे जे आम से आम कहीदे कि पेसेंट मना कला तार गोटे प्रूफ रखी अच्छे ना सो फास्ट वी इनफॉर्म द डॉक्टर देन यू टेक द sign of the client or patient in the documentation paper. Right refuse. Then number 8 is the right assessment. Right assessment. So what are the under the right assessment? First of all, we check the history of the patient. Patient history check करिबा. Here she have any allergy. तार किसी allergy अच्छी कि नहीं और ability to taking medication. से मेडिकेशन नापी एबिलिटी अच्छी ना नहीं सो फाइंड आउट प्रीवियसली गिवेन द डाइट ऑफ द पेशेंट दैट कैन बैड इंटरेक्शन प्रीवियसली किसी माने डाइट खाद्य खाई मेडिसिन खाई किसी इंटरेक्शन एलर्जी रिएक्शन होती कौन पेशेंट असेसमेंट करवा हिस्ट्री टेकिंग करवा जदि से मेडिकेशन पेशेंट में अनसेफ हो साइड इफेक्ट अच्छी देन इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म द डॉक्टर एंड नोट द रीजन इन द डॉक्यूमेंट कौन पे पेशेंट रिफ्यूज कर रीजन भी डॉक्यूमेंट करवार अच्छे हाई मेडिकेशन स्किपिंग एंड अवॉइड इट कौन पे मेडिकेशन स्किप कले कौन पे अवॉइड कले तार रीजन भी फुटअप कर अच्छे देन नंबर 9 राइट इवैल्यूएशन आम पेशेंट को तो मेडिकेशन देदेले आमर राइट कौन आम पेशेंट को इवैल्यूएट करवा पेशेंट मेडिकेशन हाउ टू रेस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट टू द मेडिकेशन प्रति पेशेंट कौन रिएक्शन है प्री स्टेटस एंड पोस्ट स्टेटस को कंपेयर करवा टेकिंग मेडिकेशन एंड ऑल्सो एंड इट्स नेसेसरी ऑल्सो टू चेक द एडवर्स रिएक्शन ऑफ द मेडिकेशन ऑफ द पेशेंट मेडिकेशन नेला परे पेशेंट किसी इफ द एडवर्स रिएक्शन हो देन वी इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी वी ऑल्सो वी इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द एडवर्स रिएक्शन डिपार्टमेंट then our inches them to doctor. Last one is the right documentation. Right documentation means it's very important to documentation after the administered medication administered kala pare it's very important to documentation because पेशेंट को हमें कौ रूट देले हुईज रूट हुईज डोज हाउ मच अमाउंट वी गिव द पेशेंट एंड ऑल्सो विथ द फुल SNDT इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन द एवरी एग्जाम व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द SNDT इट मस्ट बी एग्जाम क्वेश्चन सो SNDT मीन सिग्नेचर नेम डेट एंड टाइम आम मेडिकेशन दौचे माने आम फुल सिग्नेचर रहा दरकार नेम रहा दरकार एंड डेट टाइम कौ डेट देले कौ टाइम रे देले सेटा डॉक्यूमेंटेशन रे पुट हो दरकार इट्स एंडेड इफ यू नीड द लॉन्ग नोट ऑफ हिट्स देन कमेंट मी